Good afternoon, everyone. Today we'll be starting. I have muted everybody, and after some time, I'll unmute you as you all were making too much noise by unmuting yourself. So it was creating a disturbance, and you all were not able to hear my voice properly. So once again, good afternoon. As we have come after so many days, we are back in the class. So I would like to tell you that we'll be writing the syllabus for UT2 and term 2 in the class when we were doing question answers. Okay, when we'll do the question answers, at that time I will be making you write the note down the syllabus. And today we'll be starting with our chapter, that is chapter 5, handling a mouse. As you all know, and you all have seen also, mouse. This is a mouse, and everybody know that why it is called mouse, because it looks like a real mouse, but it is a computer mouse, not a real mouse. So first of all, mouse is an input device. What do you mean by input device? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज से कंप्यूटर के अंदर कोई फंक्शन करते हैं, जैसे कि हम इससे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी चीज ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस. इट लुक्स लाइक अ रियल माउस. वी हैव स्टडीड इट कि ये रियल माउस जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है वो माउस रखा गया है. इट इज स्मॉल इन साइज एंड हैज अ टेल. ये बहुत छोटा होता है साइज में और इसकी एक टेल होती है जो कि सीपीयू से अटैच होती है. बिकॉज इट वुड नॉट बी अटैच टू द सीपीयू, वी वुड नॉट बी एबल टू वर्क फ्रॉम इट. Who was it? Darshit, from my side, I am able to see everybody's video properly, beta. Once again, check your network whether it is proper or not. Then we'll start. So, you are able to see that this is a mouse. You all can see the mouse. Mainly, mouse has 2 or 3 buttons, but the mouse which is visible, it is having 2 buttons and 1 scroll wheel. This is a scroll wheel. Scroll wheel means जो wheel move करता है. And this is a right button and this is a left button. And you know, mouse is kept on a pad on which we work. This is known as mouse pad. क्या होता है? एक होता है right button, एक होता है left button और एक है scroll wheel और माउस पैड कौन सी प्लेस होती है जिसपे हम माउस को रखकर वर्क करते हैं. दिस इज कॉल्ड माउस पैड. द लेफ्ट बटन इज यूज्ड फॉर लेफ्ट क्लिक एंड द राइट बटन इज यूज्ड फॉर द राइट क्लिक. जो लेफ्ट बटन होता है वो लेफ्ट क्लिक के काम आता है और जो राइट बटन होता है वो राइट क्लिक के काम आता है. आई हैव टोल्ड यू माउस पैड ऑन विच वी मूव द माउस इज नोन एज माउस पैड. जिस पैड पे रखकर हम माउस को वर्क करवाते हैं उसे हम माउस पैड कहते हैं. माउस पॉइंटर. द स्लैंट एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर. जो ये एरो देख रहे हो ना, जिसे मैम मूव कर रही हैं, जो मैम के आप बिल्कुल लेफ्ट साइड टॉप पे आ गया है स्क्रीन की, ये जो एरो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माउस पॉइंटर. इसको क्या कहते हैं हम? इसको बोलते हैं हम माउस पॉइंटर. रिपीट आफ्टर मी. मैम वीडियो में सबका फेस देखेंगी. माउस पॉइंटर. वेरी गुड धनंजय, आई हैव सीन यू. अथर्व, आई एम नॉट एबल टू सी योर फेस प्रॉपर्ली बेटा. नाउ आई एम एबल टू सी. ओके. Darshit, where you have gone? I am not able to see you. Okay. Now let's come on types of mouse. We have 3 types of mouse. हमारे पास 3 टाइप्स के माउस होते हैं. सबसे पहले जो माउस था दैट वाज 2 बटन माउस. उसमें बस 2 बटन्स होते थे. वन वाज लेफ्ट बटन एंड वन वाज राइट बटन. सो वी नेम्ड इट 2 बटन माउस. क्योंकि उसमें 2 बटन्स होते थे तो हम उसे बोलते थे 2 बटन माउस. नाउ वी हैव अ 3 बटन माउस. देन वी गॉट 3 बटन माउस. Why? Because it was having 3 buttons. See, 1, 2 and 3. This was known as 3 button
mouse. Now our next mouse was scroll mouse. What was the difference? It was having a scrolling wheel like this. जो आपके computer labs में mouse है, that is a scroll wheel mouse. Okay. Now let's come to scroll wheel mouse. A scroll mouse has a scroll wheel in the middle of the left and the right button. Scroll mouse हम किसको कहते हैं? जिस माउस में लेफ्ट और राइट बटन के सेंटर में एक स्क्रॉल व्हील होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील माउस. स्क्रॉल व्हील माउस भी टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है बॉल माउस और एक होता है ऑप्टिकल माउस. बॉल माउस वो होता है कि जब आप माउस को उल्टा करेंगे तो उसके अंदर एक बॉल होती है जो मूव करती है, और जो ऑप्टिकल माउस होता है उसके अंदर से लाइट जलती है. स्क्रॉल व्हील बहुत पहले चलते थे, अभी जो हम यूज करते हैं दैट इज ऑप्टिकल माउस. सो नाउ you all know how to hold a mouse, but still for your thing I am showing you, even I'll show you the video also. Now you all are able to see ma'am. See, this is a mouse which ma'am is having. It is having scroll wheel mouse. It is having a wheel in between. This is your left button and this is your right button. And see, it is not having a ball. It is having a light, which is known as optical mouse. Which is known as optical mouse. Very good, Devraj. I hope you are able to understand. Now, in mouse, what you do, you place your palm. Ma'am will show you once again. See, this is your mouse. Ma'am will keep the palm like this. See, you hold a mouse like this. Your index finger is on the left side and your middle finger is on the right side. This is the way you hold your mouse. Please see the correct way to hold a mouse. This is your mouse. You keep your palm like this, and after that, you just keep your index finger on the left button and your middle finger on the right button, and then you drag your mouse. So this is the way your mouse works. I hope it is clear to everybody how to hold a mouse. Now let's study what are the functions of a mouse. What ma'am is doing? Ma'am is clicking. With the help of mouse, ma'am is clicking. So right now, ma'am is using the mouse for clicking. When we press the left mouse button once and release it, it makes a click sound. This sound is called clicking. A journal clicking is used to select an item. See, ma'am will show you. मैम ये माउस को लेके गई, मैम को गूगल क्रोम को सिलेक्ट करना था, मैम ने एक सिंगल लेफ्ट क्लिक किया और ये आइटम सिलेक्ट हो गया. दिस इज नोन एज लेफ्ट क्लिक. ओके, दिस इज नोन एज लेफ्ट क्लिक. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have to just see, I am just doing the clicking and it is making a clicking noise. After that, what will happen? Now let's come to the next page. We come on to the double clicking. What is double clicking? Double clicking means pressing the left mouse button twice without stopping and releasing is called a double clicking. Whenever you click something and you click twice, आप दो बार एक साथ क्लिक करते हो और बिना रुके, तो उसको बोलते हैं हम डबल क्लिकिंग. Okay, let's try. See, ma'am has done a single click. This has been selected. See, it is in blue color and a tick mark. But when ma'am will click double, see, ma'am has clicked double. What happened? The app is open. So single click means for selecting,
and double click means for opening. Single click means for selecting and double click means for opening an app. Now right click. Pressing and releasing the right mouse button once will show a list of commands on the monitor, and then you have to, what will happen, it will show the list of commands. See, I will click right. See, this items have come. This is a list which our computer is having. So right click means जब आपको कोई list देखनी होती है, उसकी details देखनी होती हैं, तो हम right click करते हैं. Now let's revise. One click means, one left click means selecting, double left click means opening an app, and right click means list of commands. Now let's see what is dragging. ये देखो मैम माउस को मूव कर रही है ना, ये मैप का माउस एरो मूव करे जा रहा है. दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग. ड्रैगिंग, दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग. सी, मैम ने ये पीसी पे क्लिक किया, इसको मूव करा और मैम इस पीसी को यहाँ पर ले आई. दिस इज कॉल्ड ड्रैगिंग. मैंने प्लेस चेंज कर दी. सी, मैम विल ड्रैग इट अगेन and ma'am will take it back to its original position. This means dragging. So to move the items or object by holding the left button placed on the screen is called dragging. We have tried it. Now everybody is going to try it at home, that how dragging is done. Now let's go for a reading. Arjun, what I have to tell again? Please write in the chat box what I have to tell again.